गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस। तो पहला है यहाँ पे सेक्शन ए में सोर्सेस एंड अप्रोच टू स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड में पढ़ना है अर्ली पेस्ट्रोल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट पढ़ना है फ्रेंड हम लोगों को द हिंदू सिविलाइजेशन, इट्स ओरिजिन्स, नेचर एंड डिक्लाइंस। नेक्स्ट पढ़ना है पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन इन इंडिया शी 2000 to 500 BC, आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, एविडेंस ऑफ ए वैदिक टेक्स्ट संहितास टू सूत्रास। नेक्स्ट पढ़ना है टीचिंग ऑफ महावीरा एंड बुद्धा, कंटेम्प्ररी सोसाइटी, अर्ली फेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन, राइज ऑफ मगध, द मौर्यन एम्पायर, अशोका इंस्क्रिप्शन, हिज धम्मा, नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट्स, द पोस्ट मौर्यन पीरियड इन नॉर्दर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया, political administrative history, society, economy, culture and religion, Tamil hum and its society, the Sangam texts. Next पढ़ना है फ्रेंड इंडिया इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्त पीरियड 2C 750, political history of northern and peninsular India, Samanta system and change in political structure, economic, social structure and culture, religion. नेक्स्ट पढ़ना है फ्रेंड थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, टेक्स्ट एंड मेजर स्टेट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मेजर फिलोसॉफिकल थिंकर्स एंड स्कूल्स, इंडिया, आइडियाज़ इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। बी सेक्शन बी में पढ़ना है फ्रेंड इंडिया 750 to 1200, पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक, मेजर डायनेस्टीज and political structure in North India, agrarian structure, Indian feudalism, rise of Rajputs, the imperial Chols and their contemporaries in peninsular India, village communities in the south, condition for women, commerce, mercantile group and guilds, guild Towns, problem of coinage, Arab conquest of Sindh and the Ghaznavide Empire, India 750 to 1200, culture, literature, Kalhana historian, style of temple, architecture, sculpture, religious thoughts and institutions, Shankaracharya, Vedants, Ramanuja, growth of Bhakti, Islam and its arrival in India, Sufism, Indian science, Al-Biruni and his study of Indian science and civilization, the 13th century, the Gorian invention, factors behind Gorian success, economic, social and cultural consequence, foundation of Delhi Sultanate, the slave dynasty, Iltutmish, Balban, the Khalji revolution, early Sultanate architectures. नेक्स्ट पढ़ना है फ्रेंड द 14th century, अलाउद्दीन खिलजी, कन्क्वेस्ट, agrarian and economic measures, Muhammad Tughlaq, concession and public works, decline of the Sultanate, forcing contact, Ibn Battuta, Battuta, economic, society and culture in the 13th and 14th century, caste and slavery under Sultanate, technological changes, Sultanate architecture, Persian literature, Amir Khusro, historiography, Jia Barani, evolution of a composite culture, Sufism in North India,
Lingayat Bhakti school in south. The 15th and early 16th century political history, rise of provincial dynasties, Bengal, Kashmir, Jainul Abedin, Gujarat, Malwa, Baham, Bahmani, the Vijayanagara Empire, Lodhi's Mughal Empire, first phase, Babur, Humayun, the Sur Empire, Sher Shah administration, the Portuguese colonial enterprise. The 5th and the early 16th century society, economy, culture, religion, cultures and literature, provincial architectural style, society, cultural, literature and the art in Vijayanagara Empire. Monotheistic movement, Kabir and Guru Nanak. Bhakti movement, Chaitanya, Sufism in its pantheistic phase. Akbar, his conquest and consolidation of empire, establishment of Jagir and Mansab system, his Rajput policy, evolution of religious and social outlook, theory of Sukh-e-Kul and religious policy, Abul Fazl, thinker and historian, court patronage of art and technology. Mughal Empire in the 17th century, major policies, administrative and religious of Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, the empire and the Jamidars. Nature of the Mughal state, late 17th century crisis, revolts, the Ahom kingdom, Shivaji and the early Maratha kingdom. Economy and society, 16th and 17th century population, agriculture and craft production, towns, commerce with Europe through Dutch, English and French companies, a trade revolution, Indian mercantile classes, banking, insurance and credit systems, conditions of peasants, famines, condition of women, culture during Mughal Empire, Persian literature including historical works, Hindi and religious literature, Mughal architectures, Mughal painting, provincial a school of architecture and painting, classical music, science and technology, Swai Jai Singh, astronomer, mystic, eclecticism, Dara Sukho, Vaishnav Bhakti, Maharashtra, Dharma, evolution of the Sikh community, Khalsa, first half of 18th century, factors behind decline of the Mughal Empire, the regional principalities, Nizams, Deccan, Bengal, Awadh, rise of Maratha ascendancy under the Peshwa, the Maratha fiscal and financial system, emergency of Afghan power, Panipat 1761, internal weakness, political, cultural and economic on eye of British conquest. नेक्स्ट सेक्शन सी में पढ़ना है फ्रेंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फैक्टर्स बिहाइंड ब्रिटिश सक्सेस अगेंस्ट इंडियन पावर, मैसूर मराठा कॉन्फिडेंसी and the Punjab as major power in resistance policies as subsidiary alliance and doctrine of lapse, colonial economic tribute system, the drain of wealth and de-industrialization, fiscal pressure and revenue settlements, zamindari, फिर structure of British Raj up to 1857 including the acts of 1773 and 1780, administrative organization, resistance to colonial rule, early uprising, causes, nature and impact of the revolt of 1857, reorganization of the Raj 1858 after, socio-cultural impact of colonial rule, official social reform measure, Orientalist Anglists, controversy coming of English education and the press, Christian missionary activities, Bengal Renaissance,
social and religious reform movement in Bengal and other areas. Women as focus of social reform. Economic 1858 1914 railway commercialization of Indian agriculture, growth of landless laborer and rural independent indebtedness, famines, India as market for British industry, custom removal, exchange and countervailing excise, limited growth of modern industry, early Indian nationalism, social background, formation of national association, peasant tribal uprising during early nationalism era, foundation of the Indian National Congress, and moderate phase of the Congress, growth of extremism, the Indian Council Act 1909, Home Rule Movement, the Government of India Act of 1919, interwar economy of India, industry and problem of protection, agriculture distress, the Great Depression, Ottawa Agreement and discriminatory protection of growth of trade unions, the Kisan movement, the economy program of the Congress, Karachi Resolution 1931, nationalism under Gandhi's leadership, Gandhi's career through thought and the method of the mass mobilization, Rowlatt Satyagraha, Khilafat non-cooperation movement, civil disobedience movement, 1940 Satyagraha and quit movement, India movement, state people's movement, other strands of national movement, revolutionary movement since 1905, constitutional politics, Swarajit's liberal responsive cooperation, ideas of Jawaharlal Nehru, the left socialists and communists, Subhash Chandra Bose and the Indian National Army, Communal Stand Muslim League and Hindu Mahasabha, women in the national movement, literacy and cultural movement, Tagore, Premchand, Subramanya Bharati, Iqbal as example only, new trend in art, film industry, writer organization and theatre association, towards freedom, the Act of 1935, Congress ministries, 1937-1939, the Pakistan movement, post 1945, upsurge, next, the first phase of independence, facing the consequences of partitions, Gandhiji murder, economic dislocation, integration of states and the democratic constitution, 1950, agrarian reforms, building an industrial welfare state, planning, industrialization, foreign policy of non-alignment, relations with neighbors, enlightenment and modern ideas, Renaissance background, major idea of enlightenment, Kant, Rousseau, spread of enlightenment outside Europe, rise of socialist ideas to Marx, origin of modern politics, Europe, state India system, American Revolution and the Constitution, French Revolution, and after the 1789-1815 British democratic politics, parliamentary reformers, free traders, क्राइस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर इसमें पढ़ना है हम लोग को फ्रेंड नेशन स्टेट सिस्टम, इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ये सब हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपका रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, जिसमें 19th सेंचुरी यूरोप रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, फैसिस्ट काउंटर रिवोल्यूशन, इटली एंड जर्मनी, द चाइनीज रिवोल्यूशन। वर्ल्ड वार पढ़ना है फ्रेंड, इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, टोटल वार्स, सोशल इम्प्लीकेशंस, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू। कोल्ड वार में पढ़ना इमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट यूरोप, यूएस स्ट्रेटजी, कम्युनिस्ट ईस्ट यूरोप, इमरजेंस ऑफ थर्ड वार वर्ल्ड एंड नॉन अलाइनमेंट, यूएन एंड डिस्प्यूट रिवोल्यूशन, कॉलोनियल लिबरेशन पढ़ना है।
फिर डिकोलोनाइजेशन पढ़ना है, अंडर डेवलपमेंट पढ़ना है, यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप पढ़ना है, सोवियत इंटीग्रेशन एंड द यूनिपोलर वर्ल्ड पढ़ना है फ्रेंड। तो ये सब हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है फ्रेंड। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, पूरा कंप्लीट सिलेबस है इसमें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।